Hello there, everybody. Welcome back. Welcome back. Today we're going to be watching and reacting to another Career 24/7 video. Remember, PD10, everybody. PD10 to get maximum discount. Look at that. Oh, well, it didn't show up on the screen. There it is. Anyways, today's video is on who does India support more, Iran or Israel? I've seen quite a lot of different opinions on this, but typically, from what I've seen, the majority usually leans towards Israel. But I don't know. Maybe there's something beyond what I can see. So, anyways, Jai Hind, Jai Iran says Iran after declaring victory, which Iran has a very peculiar definition of victory. I will just go ahead and say that. Who do Indians support more, Israel or Iran? Very interesting. Let's go ahead and give it a watch, yeah? Again, link to the video will be in the description down below. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने भारत के बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स की हेडलाइन देखी होगी। वहां पर यह लिखा है जय ईरान जय हिंद। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए, अचानक से ये क्यों लिखा जा रहा है। रीजन ये है कि ईरानियन एम्बेसी ने रिसेंटली ये नारा दिया है अपनी जीत डिक्लेयर करके। ईरान आज के समय दुनिया भर में अपनी जीत डिक्लेयर कर रहा है अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट इवन यूएस, और साथ ही साथ आप देखोगे ये डिप्लोमेटिकली रीच आउट कर रहे हैं दुनिया के मेजर कंट्रीज को। इंडिया के केस में इन्होंने ये नारा यहां पर दिया है जय ईरान जय हिंद। It sounds very much like Pakistan, doesn't it? Pakistan always declares victory, even though their defeat is like the evidence of their defeat is insurmountable. और आगे आप देख पाओगे ईरान एम्बेसी क्लेम्स विक्ट्री, थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्ट। ईरान यहां पर भारत को थैंक कर रहा है सपोर्ट के लिए ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल। एक बार को यहां पे आप कह सकते हैं हमने कौन सा सपोर्ट कर दिया, हमने तो कुछ ड्रोन वगैरह कुछ भेजा ही नहीं ईरान को। वेल अगेन यहां पे मैं देख पा रहा हूं इंडिया का साइबर स्पेस ये बन चुका है एक बैटल ग्राउंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए बिटवीन ईरान एंड इजराइल अपनी तरफ से आप अगर देखो आईडीएफ के हैंडल के जरिए। And that is the thing. This is a key pivotal thing to keep note of. That much of the warfare nowadays is on the internet. It is information based. It is cyber warfare. Sure, go ahead and give it that term. So you could do a lot with spreading, different amounts of information, correct information, disinformation. It changes the perception of people. So, I mean, this is true. This is true. Cyber warfare is a key part of warfare. बहुत कुछ पब्लिश करता है। स्पेसिफिकली आप अगर देखो इंडियन ऑडियंस के लिए भी काफी कुछ पब्लिश किया जाता है। अब ईरान उसको काउंटर करने के लिए ज्यादा प्रोएक्टिव हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन स्फीयर में ये बात होता है, आप फेसबुक पे हो, एक्स पे हो, कहीं पर भी हो, इंडियंस आपके समर्थन में है ना, तो आपको काफी बड़ा बूस्ट मिल जाएगा ऑनलाइन। और इंडिया में जैसे आप लोग जानते हैं बहुत सारे इंटरनेट के यूजर्स हैं, कई यूजर्स हैं जो This is crazy. So this is a statement from Iran in India, and they paid. This is an actual. Hold on. This is an actual governmental account. This is what that gray check means. The gray check means it's a governmental account. Statement of the Embassy of Islamic Republic of Iran in New Delhi. On the occasion of the Iranian nation's victory in the face of military aggression by the Zionist regime in the United States, the Embassy of Islamic Republic of Iran in New Delhi extends its heartfelt gratitude to all noble and freedom-loving people of India. It really is like they're trying to sway the Indian people here, including the esteemed. Oh, you know what it is? It's because there's, 300 million Muslims in India? That's what it is, isn't it? Including the esteemed citizens, political parties, honorable members of the parliament, and non-governmental organizations, religious and spiritual leaders, the university professors, members of the media, social activists, and all individuals and institutions who, in recent days, in various forms, stood firmly and vocally with the great nation of Iran. The message of solidarity, moral... Oh, I'm not going to read all this. You know what? It's there. If you want to read it, it's there. I'm sure they'll talk about the key points in the video. जो इजराइल का समर्थन करना पसंद करते हैं वो मानते हैं कि इजराइल सही है, कई यूजर्स हैं वो मानते हैं ईरान ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे अब ईरान ने भी
इंडिया में जो It's what it is. It's the specifically, talking out to the Muslim population, because that's one thing that a lot of these Islamic countries have in common is they want to create a massive Islamist country, a caliphate of like that. It's expansive. Pretty sure that's like their end goal. लोग हैं जो ईरान को सपोर्ट करते हैं उनको डिजिटली ऑनलाइन रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑन द ओकेजन ऑफ इरानियन विक्ट्री इन द फेस ऑफ मिलिट्री अग्रेशन बाय द ज़ायनिस्ट रेजिम एंड द यूएसए। मैं ये देख के काफी मतलब मुझे अजीब लग रहा है यहाँ पर कि यूएसए और इजराइल दोनों के अगेंस्ट ये जीत डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि यूएसए की पार्टिसिपेशन मुझको यहाँ पर यही दिखी, वो B2 बॉम्बर जो आए थे। खैर ईरान का ये कहना है कि Yeah, यूएसए that ने was the only thing. Well, it was more than the B2 bombers. It was the B2 bombers and that submarine, and of course those fighter jets as well. But that was it. It was just those. It was just those. अपना अटैक मिस कर दिया था। इनका कुछ न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है कुछ उस पर नुकसान हुआ नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने यूएस को भी हरा दिया। बाद में यूएस के मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल भी बरसा दिए वगैरह। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ना सिर्फ इजराइल, ईरान ने यूएस को भी हराया है। आगे कहते हैं द एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन न्यू दिल्ली एक्सटेंड्स इट्स हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू ऑल नोबल एंड फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ इंडिया। और इसमें सबको मेंशन कर दिया है, नागरिकों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एनजीओज हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं भारत में बहुत सारे जो काफी ईरान के पक्ष में ट्वीट कर रहे थे, उनको थैंक यू बोला है। मेंबर्स ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह, और लंबी पोस्ट है नीचे एंड में आप देख पाओगे लिखा है जय ईरान जय हिंद। और ये पहली बार है जब ईरान ने Crazy. इस टाइप का एक डिप्लोमेटिक रीच आउट किया है टू इंडिया, इसीलिए इसको इंडियन मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। और जैसे जैसे आने वाले समय में इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ती रहेगी। जी हाँ, अभी मैं बता दूं, जो ये सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस किया है ये बहुत फ्रैजाइल है, कभी भी टूट सकता है। ईरान ओपनली कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ नहीं हुआ, हम यहाँ पर फिर से इसको रीस्टार्ट करेंगे। यूएस मीडिया ने भी बताया, इनके पास लीक्ड इन्फॉर्मेशन है कि जो B2 बम्बर्स का अटैक हुआ था ये मिस हो गया था। तो ईरान और इजराइल This whole leaked information, it all stems from a anonymous source from CNN. There's no actual factual information about the B2 bombers not doing their job. Unfortunately or fortunately, whatever your perspective is it's the whole narrative behind it comes from a singular CNN anonymous source. So take that as you will. मिलिटरी तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बट ऑनलाइन स्फीयर में भी वो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करें ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। आप अगर इजराइल की एम्बेसी देखोगे इन इंडिया, ये लोग भी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली एंगेज करते हैं इंडियन ऑडियंस को। लिटरली आप देखोगे प्रोफाइल फोटो में यहाँ पे I didn't know these types of Israel and India. I didn't know these types of accounts existed. Seems odd, but official account of Israel, Israeli embassies. So there's official embassy accounts. Are those necessary? I don't know if they are. लिखते हैं ये मैं इजराइल के साथ हूं। और नीचे बहुत सारी आप ट्वीट्स देखोगे, ये आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगी। सुभांशु शुक्ला डेवलपमेंट को लेकर ये And from what I'm saying is that necessary? It feels like these types of like embassy accounts are just typically there to like push propaganda, push a certain narrative to the particular country. I feel like it oversteps the bounds of like what an embassy is meant to be, where an embassy is meant to be just like a connection between the two governments, the two countries. I don't know. भारत को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। और आप अगर ग्राउंड लेवल पर भी देखोगे तो इजराइल के लोग अपनी is तरफ really से cool. सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो जीत गए, वो जीत गए। ईरान में आप अगर देखोगे तो अलग तस्वीरें आपको दिखेंगी। ये आप देख पाओगे, ये इमेजेस सामने आ रही हैं आज के समय ईरान में। तेहरान में आप अगर देखो बहुत सारे लोग बाहर निकले हैं झंडे लेकर, ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लोग मान रहे हैं कि बहुत बड़ी इनकी जीत हुई है, क्योंकि जो थ्रेट इनके सामने था उसके अगेंस्ट कई कंट्रीज गिर चुकी हैं। यूएस प्रेसिडेंट बार बार कह रहे थे कि ये रिजीम चेंज कर देंगे, रिजीम चेंज कर देंगे। इन दी एंड नथिंग हैपेंड। तो इसको ये लोग Well, सेलिब्रेट no, Trump said didn't say anything about a regime change. यूएस प्रेसिडेंट बार बार कह रहे थे कि ये रिजीम चेंज कर देंगे, रिजीम चेंज। No, he said that it would end with the nuclear facilities being destroyed. He didn't say anything about a regime change. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, there was. But no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people. And they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. Do you want Well, there is that right there from Trump himself.
कर देंगे, इन दी एंड नथिंग हैपेंड। तो इसको ये लोग सेलिब्रेट बिल्कुल कर रहे हैं और आज के समय जो ईरान में सरकार है वो भी इस इवेंट को एनकैश कर रहे हैं अपनी इमेज को और इंप्रूव करने के लिए अमंग द मासेस। और इंडिया में लोग एक्चुअली सपोर्ट करते किसको हैं, इस क्वेश्चन को लेकर ना बहुत इंटरेस्ट है, ना सिर्फ इसराइल में, ना सिर्फ ईरान में, इवन इंडिया में भी। रिसेंटली मैंने देखा बहुत सारे सर्वेस किए गए थे इंडिया में ही ये जानने के लिए कि थ्रू आउट दिस 13 डे कॉन्फ्लिक्ट, ये इसराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट बहुत न्यूज में थी, इस पर बहुत कवरेज आई, इंडियंस ओवरऑल सपोर्ट सोशल मीडिया पर किसको कर रहे थे, क्योंकि ये मैटर करता है, क्योंकि दोनों ईरान और इजराइल एक दूसरे के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं। उस दौरान इंडियंस किसकी पोस्ट को ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा शेयर करते हैं, ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन, इट ऑल मैटर्स। मैटर ना करता होता ना तो ईरान और इजराइल दोनों इतना एफर्ट ना डालते इन द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। खैर, यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली सर्वे हुआ, सर्वे सैंपल साइज यूजुअली छोटे होते हैं, 1200 2000 के आसपास। Yeah, उसमें the ये लोग sample कोशिश sizes are करते हैं कि inconsequential. This is why I always have a issue with a lot of these polls. Is the sample size it's just too insurmountably small, and it can also be incredibly biased depending on the ways that the survey reached out to pollers as well. I don't like it. I don't like it at all. विभिन्न प्रकार के लोगों से सवाल पूछे जाएं ताकि एक आइडिया लग पाए कि एक बड़ी मेजोरिटी क्या सोचती है। तो भारत के लोगों से यह पूछा गया कि ओवरऑल आप किसको सपोर्ट करते हो, इजराइल, ईरान, नीदर ऑफ देम या पता नहीं। इंटरेस्टिंगली जब एनडीए के वोटर्स, अभी आज के समय भारत में एनडीए की गवर्नमेंट है, जो लोग एनडीए को वोट करते हैं ना, जब उनसे पूछा गया तो वहां पर 53.9% लोगों ने कहा कि हम लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 10% लोग थे जिन्होंने कहा कि हम ईरान को सपोर्ट करते हैं, बाकी 22-23% के आसपास थे कि नीदर ऑफ देम, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, वी आर जस्ट न्यूट्रल। और बाकियों ने कहा कि पता नहीं, यहाँ पर कोई ओपिनियन अभी हमारा है नहीं। फिर अगर I think in most cases, being neutral is probably key, especially if the countries in conflict don't particularly have anything to do with you on an everyday basis. I think being neutral is probably key. Hmm, I don't know. It's up in the air. I guess really it just comes down to personal opinion, but still, I think being neutral is probably the best. Now, we can twist that narrative on me. It's like, oh, why weren't you neutral on the whole Operation Sindoor, India Pakistan thing? Is because I have a lot of friends in India, so of course I'm not going to be neutral on that point when I have friends that were very, very close to a lot of the counterattacks from Pakistan. So at that point, I don't have any neutrality at that point, right? I don't know. It's different for everybody, but yeah, it seems like here the opposition is more in favor of Iran during these polling events. अगर हम बात करें टोटल की, अगर हम इसमें एनडीए But look right here, but 1,217 voters. That's it. 1,200 people. That's it. You're basing this on the entire, you're basing this entire narrative on 1,200 people. वोटर्स और बाकी जो अलायंसेस हैं उनके वोटर्स सबको अगर हम काउंट करें तो ये परसेंटेज ऐसे बनती है, 36.7% इंडियंस सपोर्ट करते हैं इजराइल को, ईरान को सपोर्ट करते हैं 28.8% लोग, और नीदर ऑफ देम मतलब कि किसी को सपोर्ट नहीं करते, यहाँ पे आप देखोगे 27.3% लोग आपको दिख जाएंगे, और बाकी ऑफ कोर्स दे जस्ट डोंट रियली नो। बाकी आप अगर ऑपोजिशन पार्टीज का अगर देखो तो वहां पर जो मैथ है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उधर ज्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा ईरान का। ऑपोजिशन पार्टी वोटर्स में 38% पॉपुलेशन है जो ईरान को सपोर्ट करती है, 23% पॉपुलेशन है जो इजराइल को सपोर्ट करती है, और यहां पर भी नीदर ऑफ देम वाली जो पॉपुलेशन है ये आपको 28% के आसपास मिलेगी। और आप अगर मुझसे पूछे, सबसे ज्यादा समझदार लोग यही है जो कहते हैं कि वी सपोर्ट नीदर ऑफ देम, क्योंकि मैं आपको साफ साफ ये बता दूं, अगर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर होती है, क्योंकि अभी भी ना हमको पता नहीं है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ हुआ क्या है। इनके वाइस प्रेसिडेंट की रिसेंटली एक कमेंट आई थी, वो कह रहे थे कि जो हमारी न्यूक्लियर जो साइट थी वहां पर फॉर्दो में उसको सिग्निफिकेंटली डैमेज किया गया है। अमेरिकन मीडिया खुद कह रहा है इंटेलिजेंस असेसमेंट जो इनके पास जो लीक हो गई है इनके पास, ये यहां पर कह रहे हैं कि जो यूएस की स्ट्राइक्स। Again, this is coming from an anonymous source. He's even showing the CNN article here, but this is coming from an anonymous source. So you can't take this with any grain of salt, right? You can't take this with any grain of credibility whatsoever. से इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, तो इसको लेकर काफी अभी असमंजस है कि एक्चुअली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का स्टेटस है क्या। क्या सडनली ईरान एक दिन एक न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने आप को डिक्लेयर कर देगा एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश या नहीं। तो इस बीच ना मैं आपको साफ साफ ये बता दूं, बिल्कुल कभी भी
फिर से वॉर स्टार्ट हो सकती है इजराइल और ईरान की, और इस बार हो सकता है कि कंट्रोल में भी ना आए चीजें। रिसेंटली एसबीआई ने एक रिसर्च करी कि अगर ये इजराइल और ईरान लड़ पड़े, मान लो कि ये दोनों बस दे गो ऑल आउट, कि बस डिस्ट्रॉय कर देना एक दूसरे को। और इस बार तो हमने ये भी देखा कि जो क्रूड ऑयल था इसको भी टारगेट किया गया था। मान लो ये अपना कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उस केस में ना भारत की जीडीपी में 5.1% की कटौती आ जाएगी, क्योंकि कच्चा तेल सीधा उस सिनेरियो में $130 पर बैरल तक पहुंच जाएगा। ये डेवस्टेटिंग होगा भारत के लिए। आई मीन हमारी जॉब, स्टॉक मार्केट, हर पैरामीटर में ये भारत को हर्ट करेगा। सो ऑल आई रियली होप कि ये दोनों पीस So this isn't anything really to do with Iran itself. It's in the shutting down of the Strait of Hormuz. So it's India getting their oil from the other countries there, which I don't know. I think if the Strait of Hormuz was shut, India would just pivot and get more oil from Russia. Because India doesn't get any oil from Iran. India hasn't gotten any oil from Iran since 2019. So it really comes down to like what Saudi Arabia, Qatar, UAE, stuff like that from the Strait of Hormuz side. But yeah, if the Strait of Hormuz was shut down, there's so many other potential ways to get oil. पीसफुली अपने जो भी इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व करे। लड़ाई करके, वॉर करके ये ना सिर्फ एक दूसरे का, पूरी दुनिया में जो बाकी सब कंट्रीज हैं उनका भी नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, हु डू यू सपोर्ट, इजराइल, ईरान या नीदर ऑफ देम? सिर्फ मैंने बोल दिया कि वो स्मार्ट लोग हैं तो इसलिए ये मत बोल देना कि नीदर ऑफ देम। यू माइट हैव योर ओपिनियन। हो सकता है कि आप यहाँ पर कहे कि मैंने पूरा रिसर्च किया, ये पूरा मैंने काफी इवैल्यूएट किया, मेरे हिसाब से ईरान ठीक है या इजराइल ठीक है। आपका खुद का ओपिनियन भी यहाँ पर हो सकता है। शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए। All right, PD10 everyone. PD10 everybody. PD10. Again. It's very weird. It's very, very weird. Iran, we won, congrats. Israel, we won, congrats. We only support India and Indian interests. Supporting Israel the day Iran starts supporting India in Kashmir issue or in OIC, I'll go neutral. People who support Iran should know that during Pahalgam, Israel strongly supported India, and Iran and Turkey supported Pakistan. Not to mention, Israel helped India since 1971 and always supported India as much as possible, depending on their ideology, depending on their religion. Yeah, it's the religion. That's what it is. It's silly of me that I didn't even realize that until much later into the video. I was like, what? No, what? And then it's like, oh, it dawned on me. It's because of the religion. It always comes back to a religion. The Middle East is always like a religious conflict zone. It's always contentious because of religion. Friend is need, friend is indeed. Israel, India, friendship is beyond personal gains. Israel helped India in Kargil in 1971. I fully support Israel after the statement of Ali Khamenei after comparing Kashmir with Gaza. Okay, then. They're nothing alike. As India, I fully support Israel too much because Israel always supports India in the past. Dear Hindus, please get united and work hard. We have to make Bharat superpower. I only support India, not IR. What is IR? Is IR Iran? I don't know. It doesn't show the flag here, and I it's too early in the morning for my brain to work that well. Yeah, IR is Iran. Okay. Okay. Depending on the ideology, yeah, depending. Oh, yeah, we already read this. Why did it show up twice? Unless that's just a copy and paste. I support Israel. I only stand with India. Indian Hindus, Israel, Indian Muslims, Iran, normal humans, none of our business. Normal humans. This person's insinuating people that follow a particular religion aren't normal humans? This person's insinuating that Hindus aren't normal humans and Muslims aren't normal humans. Come on. Who is this? Who are you? Who are you? There's no permanent enemy and unfriend in geopolitics. We've won. Jai Hind. You know what? Let's go to new comments and see what's on that. What the? Iran? I support Israel because nuclear weapons are not good for our planet and humanity. We should keep stance for peace. Did you know there's been over
2,000 nuclear bombs that have been exploded on our planet. 2,000 of them. And that's the ones we know of. There could be a lot more. Just saying. Just saying. It's not going to cause a Fallout-like experience. You would need, tens of thousands. You would need more nuclear weapons than there are nuclear weapons for that to be the case. You need tens, almost hundreds of thousands of nuclear weapons to end the world. Okay. 99% of the subscribers here support Israel. I only support India. Israel is the best. Modi timed ceasefire missile. Don't know what that means. You know who I support, guys? You know who I support? I support myself. That's right. I support myself. It's, you gotta be liquid. You gotta be fluid with it. You gotta be dynamic with it. It's not good to be structured and take a singular stance and stay rooted in that stance forever. You gotta support common sense, guys. Common sense is king, everybody. Just got to take in all the facts, all the information, and go from there. You shouldn't just blindly support one narrative, right? You gotta take in as much information as possible, and then once you've accomplished that, once you've seen enough to determine a side, then you take that side. But no, for real though, I don't know. It's very contentious. Again, I don't believe that Iran should have nuclear weapons. I think that's a major issue. I do think that Iran, unfortunately, is one of the main, contributors to terrorism around the world. So that something like that needs to be taken into effect as well. It's the same with Pakistan. Pakistan and Iran, they both support terrorists. They both either have or want to have nuclear weapons. And I think both of them, in that aspects, need to be shut down completely. Now, is that a regime change? No. Is that, destroying of facilities? Yeah, sure. Why not? Destroy those facilities. Get them out of there. Now, how do we deal with terrorists? Well, that comes down to the governments. Maybe I am calling for regime change. Maybe regime change is necessary. I don't know. I don't know enough to know about it. And that's why I'm not in any political position, because I am not at that stage of my life where I can decide something like that. Anyways, link to the video will be in the description down below, ladies and gentlemen. Take care. Have a good one. Goodbye.